topic is insights into the energy basket. So in the energy basket, we have currently on MCX couple of products, crude oil and natural gas. And today we have with us Komal Kanzaria. She is the business development head, Gujarat division for from MCX. She will be with us and throwing some light on the couple of products and how to deal with them. With the kind of volatility we have seen over the past 3 4 years in both these products. Along with Komal, we have with us Dilip Parmar. He is our research analyst from HDFC Security. Along with him, we have Saumil Gandhi. He is also the research analyst with HDFC Security. They both will be showing some light on charts with respect to crude oil products and natural gas product. So not wasting much time, Komal ma'am, over to you. Thank you, Samit. Thank you very much. Thank you, HDFC Security, for providing us a platform, and thank you, Dilip ji and Saumil, for being with me. So, as pointed out by Samir, the energy which is in a need of an hour, anyway, in our day-to-day life also, and in our trading also, energy is must. I hope my voice is audible, and you are people able to see my screen also. So today we'll Yes. talk about. Hello, sir. Everything is Yeah, yeah. fine, no, sir? Samir, sir. Yes, yes. Okay. You're audible and screen is visible, ma'am. Okay. So today we'll talk about the energy basket at MCX. So whatever we are discussing today, it is only basically it's only the academic purpose and knowledge sharing purpose only. If I during my presentation, if I'll say crude will move up, it doesn't mean I'm in TG for crude or Mandi for natural gas. Don't take it like that. It is only for the presentation purpose, and it is only for the knowledge sharing purpose. I'll take 20-25 minutes of your time. So within this time, I'll try to highlight all the aspect of in the energy basket at MCX. So when we talk about energy basket MCX, it consists of crude oil and natural gas, which is the two major component of energy basket. अगर हम लोग बात करें energy complex के बारे में, तो उसमें crude oil और natural gas का futures, options और indices, तीन चीज के बारे में हम बात करेंगे. तो first of all, I'll cover the future contract specification and parameter affecting the prices. And last, I'll cover some of, not everything, because option is a very vast subject. We cannot go into the detail of each and every strategy. But I try to give the contracts highlight of the contract specification as well as some of the popular strategy in commodity MCX crude and NG option product also. So as I have pointed out, sir, the product basket itself, अगर हम लोग बात करें crude oil और natural gas के बारे में, तो we have, say, for future contract, future segment, we have a 4 contract. One is crude major contract, which is of 100 barrel contract, crude mini contract, which is of a 10 barrel ka contract, natural gas contract with lot sizes of 1250 ka contract, natural gas mini, which is very new. So those who are connected with this market since long, they are aware. In up to say 2019, we have stopped crude mini. At that time, there is no natural gas mini, but now the एक साथ दो का फायदा वाला thing is come up. In crude mini has also come and NG mini is also come. So crude bada wala, let us take some revision. Bada wala crude ka contract is of 100 barrel ka contract, mini crude is of 10 barrel ka contract, NG bada wala is of 1250 ka contract, and NG mini is in 250 ka contract. Why mini? हमको ये भी लगता है कि why we need to, when we have a major contract like crude oil and natural gas, why we need to have mini? But in an earlier session also, mini hai to mumkin hai kind of a thing. Here the basic requirement for the market participant is how to utilize their capital. Here we don't say we don't have as a money to invest in the market, but how much money you can invest as an individual investor. तो आपके पास जितना भी मार्जिन है वो आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो, कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन करेंसी आल्सो. एंड व्हेन इट कम्स टू द कमोडिटी एंड द मार्जिन इज वेरी हाई, it is very unlikely to, as an investor, you can devote some of your money to commodity segment. So for that, meaning that crude mini ka contract and NG mini ka contract is very much important, because anyway the crude and crude ka margin is around 40%. So in that margin, if you try to do trading in crude bada wala contract, which is of 100 barrel contract, if I'll take the prices of, say, average price of, say, 6,000 rupees in crude oil, you can imagine the value of margin which you need to pay for to trade in the crude oil bada wala contract. That is why crude mini contract is very popular. Along with crude, there is a natural gas mini also.
So for the future product basket point of view, we have a crude bada, crude chota, NG bada and NG chota. On the same product, crude bade wale contract ke upar we have an options where the lot size is 100 ka contract, whose expiry is monthly and it is settled in future. There are so many investors, those who are having that conception ke commodities ke options mein delivery hota hai. But for all of information, commodities options are future settled contract, not delivery based contract. तो क्रूड बड़े वाले के ऊपर भी हैव एन ऑप्शंस, एनजी बड़ा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है 1250 का, उसके ऊपर भी वी हैव एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. Along with the future and option, we have another basket called energy index, whose combination is of say 50% crude and 50% NG, where the lot size is 125, which is also a monthly contract. Here I would like to highlight one point is in crude oil, bada and chota, similarly in NG, they everybody all the future contract are monthly contract, as well as it has been settled with the cash. It has not a compulsory delivery contract like gold, silver, and other metal contract in exchange at MCX. So it is in a cash settled contract. Similarly, their options is also a future devolved contract, and future is a cash settled contract. So for crude oil and natural gas contract, all the options are cash settled contract and not a physically delivery based contract. So this consists combine the energy basket at MCX. When we talk about those who are new to this market, for them the timing of an exchange is very crucial, because most of the people who deal in equity market, they say after 3:30 we don't want to trade into the market. But for the commodities internationally also, when we say commodity being a global asset class, it has a variation, and timing is different than your routine equity ka timing, because of its nature, by nature it's an international per se. If you talk about LME is also 1 hour, आप देख सकते हो 1 घंटे का ही उसमें बंद रहता है, बाकी चलता है. Shanghai, you can see the timing. CME, you can see the timing. Tocom and MCX. At MCX, we work from 9 to 11:30 in Garmi ki season, and in winter season, we'll work for the 11:55 tak we are open. During that time, we can fetch the volatility ऑल थ्रू द ग्लोब. जहां जहां इंटरनेशनल मार्केट ओपन और क्लोज होते हैं, उस हर एक के दौरान कमोडिटीज का जो कुछ भी घटा पड़ी रहता है, वी आर एबल टू फेच दोस वॉलेटिलिटी ऑन आवर स्क्रीन. दैट इज व्हाई आवर टाइमिंग इज फ्रॉम 9 to 11:30 in this point of time. Why crude oil and natural gas are so important to track with? Because of the volatility. Usually when we ask any investor or any trader क्या चल रहा है मार्केट में, तो बोला बिल्कुल मजा नहीं है. तो what is that मजा? मजा is nothing but the volatility which they got it from the market, or the price movement which they would like to trade, which they would like to encash as an opportunity. So when you talk about the crude oil and natural gas, you can see the annual price volatility for both the contract. Like crude oil, you can say this is the average price volume, and for crude and NG. Similarly, if you talk about the volatility, which is the main point of discussion for today's thing, is crude oil, you can see the 44% in 2016, 17 is 24%, 21. I don't have the data in this slide, but on an average, volatility in crude is around 55% as of now. Similarly, is case with NG. NG is around the volatility of 85%. So you can imagine the volatility is say 55 in crude, and NG is around say 85%, which is a highly volatile product. So when there is a high volatility, it includes high risk also, and it includes high return also. So those who like to trade volatility, those who option trader who like to encash, or you can would like to take a trade on vol based trade, they can always that is their prefer commodities, crude oil and natural gas. I are trying to show the prices of MCX crude oil price is in line with the NYMEX WTI crude oil prices, because we have a treaty with them. So whatever international price movement are there, MCX screen is nothing but the international price multiplied by dollar rupee of that particular day. So MCX crude oil price has a high 99% correlation with the NYMEX WTI crude oil also. Similarly, for the natural gas also, we track the MCX follow the price range, price movement of the NYMEX NG, which is around 98% of correlation for as far as international prices are concerned. Now, when if you want to say, I'm aware that crude oil में there is a two contract, but is 100 barrel and 10 barrel. NG में मेरे पास में 1250 और 125 का contract है. But we being investor, we really don't know which factor drives the market. When we talk about the equity or currency market, it is very, TV is showing so many things.
so many research are available, but when we come to the commodity, we always try to figure it out where how the prices are moving as far as energy basket are concerned. तो जो क्रूड ऑयल में काम करते हैं, मेरे बाद में दिलीप जी और सौमिल जी आएंगे, वो शायद आपको उसके ऊपर ज्यादा बात कर पाएंगे. But as we are gathered today we have gathered, so there are some important point on which the crude oil market moves worldwide. मैं वर्ल्ड वाइड ये वाला शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि कमोडिटीज के अंदर में जब कभी भी हम लोग बात करें तो इट इज एन ऑलवेज एन इंटरनेशनल कोरिलेशन. सबसे बड़ा फैक्टर अगर क्रूड ऑयल मार्केट के ऊपर है तो दैट इज ओपेक का सप्लाई, आउटपुट और सप्लाई. यू नो रिसेंटली यू माइट हैव हर्ड दैट Saudi Arabia says will cut our production, we don't want to have higher production. Sometimes some other country will say we'll increase our production. So this OPEC and OPEC plus countries production, supply and cut impact the prices on crude oil market. Changing scenario precisely last week, 15 days only, there is an upward movement in the crude oil price. Otherwise it's a 5,800 5,700 range crude oil is trading, because globally the phenomena is everywhere there is a recession. So when there is a recession, there is no demand of crude oil. So these are the factor which drives the crude oil market. Similarly, the most important data on which crude oil market or NG market moves is the inventory data. It release for crude oil every बुधवार को इन्वेंट्री, और फॉर एनजी एवरी गुरुवार को जो इन्वेंट्री आता है उसके बेसिस पे मार्केट में ऊपर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है. जियोपॉलिटिकल फैक्टर, द क्लासिक एग्जांपल इज रशिया यूक्रेन वॉर, और से यूएस और चाइना एंड ताइवान फ्रंट. These all kind of a factor making an impact on the prices of the crude oil. Speculative buying, seller, weather condition. Weather condition is much more important for the NG, that I will cover in the next slide. Here I try to give some input on the US inventory scenario also, where WTI crude oil prices, somebody say ये हम लोग देखते हैं प्राइस, लेकिन जिस दिन इन्वेंट्री आता है बढ़ के आता है, फिर भी वो प्राइसेस में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था बढ़ के आना, मींस डाउन होना चाहिए, होता नहीं है. बिकॉज आपको सिर्फ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री नहीं दिखता है, उसके साथ में गैसोलीन और डिस्टिलेट, ये तीन चीजें मिला के आपको इसके अंदर में से अपना व्यू निकालना है. क्रूड ऑयल से डिस्टिलेट आता है, उससे गैसोलीन का स्टॉक आता है. इफ एवरीथिंग इज माइनस माइनस, देन यू कैन चेंज द प्राइसेस ऑफ क्रूड. आप उसके ऊपर अपना व्यू ले सकते हो. जहाँ पे एक एग्जांपल में क्रूड ऑयल इन्वेंटरी इज अप, गैसोलीन इज आल्सो अप एंड डिस्टिलेट इज आल्सो अप, प्राइसेस विल डिक्लाइन. Similarly, if everything is down on say crude oil, gasoline and distillate, if everything is down, price will go up. Any of the parameter here I try to say, any of the parameter is plus or minus, it will nullify the impact. So for crude oil and natural gas, the inventory data is most important data for investor. Similarly for the NG factor, NG के लिए आपको global economic growth, crude oil का prices, because natural gas का prices is also derived from the crude oil का prices और market movement आता है. Geopolitical factor, events, industrial and residential demand, स्पेशली एनजी में जब विंटर सीजन आता है, वेदर, कई लोग एनजी को पीपल टर्म एज एन वेदर डेरिवेटिव आल्सो, क्योंकि गर्मी और ठंडी के हिसाब से ही इसका यूजेस डिफरेंशिएट होता है इन इंटरनेशनल मार्केट, और दैट इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर टेकिंग द प्राइसेस ऑफ natural gas. उसका inventory, US weather condition, rig count, this commodities is stored in rig, NG is been stored in rig, तो rig count is also important parameter. और ये सारी information आप HDFC का research में से तो आप information ले ही सकते हो. इसके अलावा बहुत सारी और free of cost website है, जैसे forex factory हो गया, investing.com हो गया. These are the websites, M6 का website जिसके ऊपर से आप सारा information ले सकते हो. ये मैंने थोड़ा दिखाने का ट्राई किया है, हाउ इट इज इन टेंडम विद इंटरनेशनल मार्केट, वो दिखाने का मैंने ट्राई किया है यहाँ पे आपको. उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में देख ले हम लोग. क्रूड ऑयल, क्रूड वैसे तो आगे हमने कवर किया ही है. क्रूड बड़ा वाला 100 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट है और मिनी है 10 बैरल का है. प्राइस कोटेशन रुपीस पर बैरल में है. टिक प्राइस रुपी का है. क्रूड ऑयल बड़े वाले में 100 रुपीज पर टिक मूवमेंट इज विल गिव फेच यू द प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 100 रुपीज, वेल मिनी हैज अ मूवमेंट ऑफ 10 पैसे में आपको आएगा इसके अंदर में. इसका मार्जिन स्पैन, इनिशियल मार्जिन और स्पैन मार्जिन एप्लीकेबल होता है. यहाँ मैंने 30% रखा है, लेकिन लेटेस्ट इज 40% का मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है. और इसका जो ड्यू डेट रेट फॉर द क्रूड मिनी और क्रूड मिनी, नेचुरल गैस नेचुरल मिनी इज एनवाइस का न्यूयॉर्क एनवाई नाइमेक्स का जो सेटलमेंट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय डॉलर, उस दिन का डॉलर रुपए के हिसाब से क्रूड ऑयल का प्राइस सेटल होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट एनजी, एनजी बड़ा वाला इज 1250, छोटा वाला इज 250 का कॉन्ट्रैक्ट. वहां पे भी प्राइस जो आपका टिक प्राइस है 10 पैसे का है, जबकि यहाँ पे मूवमेंट बड़े वाले में 1 रुपए के ऊपर 125 का घटा पड़ी होता है, जबकि छोटे वाले कॉन्ट्रैक्ट में 25 रुपए का घटा पड़ी होता है. सेम उसका भी सेटलमेंट नाइमेक्स के हिसाब से ही
आता है। ये हो गया, बात किया हम लोगों ने हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्रूड मिनी, एनजी मिनी के बारे में। अगर हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करें तो वी हैव एन ऑप्शंस ऑन क्रूड ऑयल बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट एंड एनजी छोटा वाला बड़ा वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही हमारा ऑप्शंस है। तो इसका भी प्राइस इज सेम। इसका अंडरलाइंग फॉर क्रूड ऑयल ऑप्शन अंडरलाइंग इज क्रूड फ्यूचर, एनजी में है वो एनजी फ्यूचर हमारा अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है। प्राइस कोटेशन रुपी पर बैरल, यहाँ पे प्राइस कोटेशन रुपी पर एमएमबीटीयू के हिसाब से है। when we talk about crude oil का जो स्ट्राइक इंटरवल 25 इन द मनी 25 ओटीएम और एक एटीएम, यानी एट ए टाइम आपको 51 ऊपर और 51 नीचे की स्ट्राइक्स ओपन मिलेगी। स्ट्राइक इंटरवल है वो 50 में ही है, बट द मैक्सिमम वॉल्यूम विल हैपन एट द 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस। सो एज ए इन्वेस्टर अगर इफ यू सी द स्क्रीन यू फिर अरे यार 50 में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, बट काम ज्यादा हो रहा है, दैट इज एन 100 का स्ट्राइक, लाइक इक्विटी मार्केट where the market rounded themselves in the 100 rupees. Similarly is case with NG crude oil, वहां पे 100 रुपए के ऊपर ज्यादा काम रहता है। इसमें अंदर में 1 रुपी टिक के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इट डिवॉल्व्स इन द एमसीएक्स क्रूड ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग क्रूड के बारे में बात करें तो क्रूड का ऑप्शंस अगर फ्यूचर इज एक्सपायरिंग ऑन 19th of जुलाई, today is the expiry of the 2 day prior is the expiry of the crude oil option contract. So your options will expire on the closing price between 11 to 11:30 के भाग जो विवेक के ऊपर हमारा क्लोज भाव होता है उसी के ऊपर हमारा आज का क्रूड का सेटलमेंट होगा। सो दैट इज हाउ एमसीएक्स के ऊपर क्रूड का जो ऑप्शन है वो सेटल होता है। सेटलमेंट डे है वो प्रायर टू द 2 डे ऑफ जो फ्यूचर के 2 दिन पहले ऑप्शन का एक्सपायरी होता है। वर्किंग डे आपको पकड़ना है, डोंट गो बाय द कैलेंडर डे, वर्किंग डे 2 पकड़ के आपको चलना है। इफ यू टॉक अबाउट द एनजी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो सिमिलरली उसमें भी अंडरलाइंग इज एनजी का फ्यूचर, उसमें भी रुपी पर एमएमबीटीयू का प्राइस कोटेशन है। आपको ऑन एवरेज स्क्रीन के ऊपर 31 कॉल 31 पुट के हिसाब से आपको स्ट्राइक मिलेगा। स्ट्राइक इंटरवल 5 का है, लेकिन मैक्सिमम वर्क विल हैपन इन द 10 के काउंटर वाली स्ट्राइक के ऊपर। वहां 1 रुपए के ऊपर आपको 62 रुपीज 50 पैसे का प्रॉफिट एंड लॉस है। हियर अगेन योर ऑप्शंस इज डिवॉल्व इनटू द फ्यूचर ऑफ एनजी, तो उसी के हिसाब से है। सिमिलरली आपका जो 2 दिन एनजी का ऑप्शन अगर 25 तारीख को फ्यूचर अगर 25 तारीख को खत्म हो रहा है तो उससे 2 वर्किंग डे पहले एनजी का ऑप्शन विल एक्सपायर। ये यहाँ पे दिखाने का, अगर हम लोग एवरेज बात करें तो क्रूड ऑयल एनजी का विल कंट्रीब्यूट अराउंड से 90% ऑफ एमसीएक्स ऑप्शन वॉल्यूम। वो आप यहाँ ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के हिसाब से चार्ट के ऊपर से आप देख सकते हो। ऑन एन एवरेज क्रूड ऑप्शन में एवरेज 60,000 करोड़ का सिंगल साइडेड काम होता है। इफ यू गो बाय द टर्नओवर साइड इट विल गिव 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट का इसके अंदर में काम होता है। ये मैंने स्क्रीन देने का ट्राई किया है जैसे हम इक्विटी के अंदर में अपना ऑप्शन चेन देख पाते हो। सिमिलरली यू आर एबल टू सी द ऑप्शन चेन फॉर कमोडिटी क्रूड ऑयल एंड एनजी ऑल्सो। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाने की चेष्टा की है। आप इसको कभी भी रियल टाइम बेसिस पे देख सकते हो, जैसे इन द मनी आउट ऑफ द। आप सर यहाँ दिखाने का मतलब ये है सर, यू कैन सी द प्रीमियम प्राइजेस। दोज हु आर राइटर ऑफ एन ऑप्शंस दे नो द वैल्यू ऑफ प्रीमियम। जो लोग राइट करते हैं उनको पता है कि जैसे ही, क्योंकि इसमें प्रीमियम बड़ा होने का वन ऑफ द रीजन इज वी हैव अ 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी वाला कंसेप्ट नहीं है जो मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगी। हमारे सारे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो मंथली में उसका इंटरेस्ट भी उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा और उसका प्रीमियम भी उसी के हिसाब से दिखाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्रीमियम प्राइसेस आर हायर, वो आप दिखाने का मैंने चेष्टा किया है। यहाँ पे आई एम ट्राई टू नो कोरिलेट इट विथ योर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। अगर मान लो इफ यू आई वुड लाइक टू से इफ यू आर यूज्ड टू डू ट्रेडिंग इन इक्विटी इन ऑप्शंस, so I try to correlate your terminology with क्रूड ऑयल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैंने यहाँ कवर करने का ट्राई किया है। जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो वहाँ लॉट साइजेस 50, इक्विटी में 50 है, तो उसके सापेक्ष में क्रूड इज ऑफ से 100 बैरल और एनजी इज 1250 का कॉन्ट्रैक्ट है। वहां पे स्ट्राइक इंटरवल 100 का है, यहाँ पे निफ्टी में 50 का है, क्रूड में 50 का है और एनजी में 5 का है। प्राइस रेंज दिखाने का ट्राई किया है। सो माय ओनली इंटेंशन इज टू गिव यू द सेम कंफर्ट व्हिच यू आर डूइंग और ट्रेडिंग इन इक्विटी ऑप्शंस। So same knowledge, same thing can be applied on the crude oil and NG options also. Option by product has no changes, same in the money, same out of the money, same ATM terminology will be used. But the only thing is you need to find out how many strikes are there, what are the strike interval, what are the development process of this, how the crude options has been settled. तो वही दिखाने का मैंने ट्राई किया है आपको। एक और कंपैरिजन ले लेते हैं हम लोग
which people are used to have in equity options or commodities, especially commodities में भी crude और NG में क्या major differences I try to highlight it. In equity you have a monthly as well as weekly expiry, while in NG we have NG and crude we have a monthly expiry. Here expiry date equity din is fixed, like Guruvar is the day for equity expiry, जबकि इन कमोडिटीज मिडल ऑफ द मंथ 15 to 20 के बीच में क्रूड ऑयल और एनजी की ऑप्शन का एक्सपायरी होता है. हियर दिन इज नॉट फिक्स, हियर द डेट इज वेरी एज फार एज द future calendar has been confirmed. Here every Thursday you get a movement due to expiry. In case of crude oil and NG you can get a movement on every Wednesday and Thursday because of inventory. उस दिन सबसे ज्यादा volatility होता है, or those who love volatility they love options also. The same way you can do trade in energy on every Wednesday and Thursday. वॉल मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है. इट इज ऑन हाई वॉल प्रोडक्ट ऑल्सो. तो जो लोग वॉल शॉर्ट करके काम करते हैं या तो फिर लॉन्ग करते हैं तो उसके हिसाब से काम करना उनके लिए आसान हो जाता है. इन इक्विटी द मूवमेंट और द फैक्टर विच इम्पैक्ट द प्राइसेस आर द डोमेस्टिक फैक्टर प्राइसेस एंड इंडिविजुअल मैनेजमेंट के हिसाब से होता है, जबकि कमोडिटीज के अंदर में इंटरनेशनल प्राइसेस और इकोनॉमी के आधार पे घटा पड़ी आती है. जो हमने आगे डिस्कस किया था वही सेम पैरामीटर के ऊपर एनर्जी ऑप्शंस भी काम करते हैं. स्ट्रेटेजीज तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर बाई सेल ऑप्शन करना हो तो आप सबको पता है, इफ यू आर बुलिश ऑन से एनी अंडरलाइंग, इफ यू आर बुलिश ऑन क्रूड यू हैव एन ऑप्शन ऑफ बाइंग अ कॉल, इफ यू आर बेरिश ऑन क्रूड यू आर एन ऑप्शन ऑफ बाइंग ऑफ अ पुट. मेरा यहाँ बोलने का मतलब ये है बाई सेल करने के लिए नहीं. वाई सम पीपल से आई विल डू ओनली बाइंग, क्योंकि बाइंग का सबसे बड़ा ब्यूटी ये रहता है यू नीड टू पे ओनली प्रीमियम, आपको मार्जिन पे करना नहीं होता है. Sometime your premium will act as your stop loss also. In the future, it is very difficult for an individual trader to keep any stop loss in that routine trading. But if you are there, suppose मान लो मैंने 6,000 का ऑप्शन बाई किया है with the premium of 30 रुपया, तो 30 रुपया will act as a stop loss for me. My maximum loss is 30 रुपया, उसके ऊपर का मेरा लॉस होने का चांसेस नहीं है. और बाई चांस मेरे फेवर में अभी नहीं है मार्केट, मैंने बढ़ाने के लिए साथ में बाई किया था, तो 30 रुपए का प्रीमियम 20 हो जाता है, तो आई एम इन लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर डे. बट ड्यूरिंग द मंथ अगर मैं रहती हूँ मार्केट में और फिर से स्पाइक आता है, मेरा कॉल सही बनता है, तो 30 रुपए वाला 40 रुपया होगा, देन माई ट्रेड विल बिकम अलाइव. तो इसका ब्यूटी यही है कि जब नहीं मेरे फेवर में नहीं है तो मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है, जब मेरे फेवर में है तो प्रॉफिट पूरा मेरा है. Those who were like this kind of trading, they always go for the buying of an options. Selling of an options, when you expect the price right but it's not beyond certain level, fallen of a price not beyond certain level, those people will come on to the selling of an options. But for seller you need to pay the full margin as a like in a future also. तो सेलिंग वही लोग करते हैं जो प्रीमियम के कैलकुलेशन के साथ में करते हैं. मेजॉरिटी प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शंस विल वेरी ऑन द ऑप्शन एज पर द ऑप्शन ग्रीक ओनली. There are certain when we trade about the options ऐसे bullish bearish बहुत कम लोग ये लोग कर पाते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर. बट ऑप्शन स्ट्रेटेजीज फॉर से अगर मैं bullish के if I'm a bullish on market or bullish on the underlying, what kind of a strategy I could have executed? These all the strategies are very well available in NISM book also. There are an examination also. But if you are bullish on a market, you can go for the protective put, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर बुल पुट स्प्रेड, लॉन्ग कॉल एंड कॉल बैक स्प्रेड पे भी काम कर सकते हो. इफ यू आर बेरिश ऑन मार्केट देन प्रोटेक्टिव कॉल आपके लिए बेटर हो सकता है, बेयर कॉल स्प्रेड हो सकता है, बेयर पुट स्प्रेड हो सकता है, लॉन्ग पुट हो सकता है और पुट बैक स्प्रेड भी हो सकता है. when here the call is about the market rate, but when you talk about volatility, when you are neutral to bullish on vol, then long straddle, long put synthetic straddle, long call synthetic straddle, long guts, शॉर्ट पुट बटरफ्लाई आपके लिए बेटर हो सकता है. व्हेन यू आर न्यूट्रल टू बेरिश ऑन वॉलेटिलिटी, ये सारी स्ट्रेटजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. when we say options has an you have to formulate a plan. लोगों को लगता है ये बहुत आसान है, but when we enter into the options we should hedge our position. Hedging could be done with the delta, जो options Greeks है उसके साथ भी आप hedge करके कर सकते हो. if you are say मेरे को option के अंदर में उतना घटा पड़ी नहीं आता है, वो सारे मीन्स मेरा अंडरलाइंग में मैंने काम डायरेक्ट फ्यूचर में काम करता तो मुझे ज्यादा अच्छा रहता rather than coming into the options. लेकिन हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है सर, तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है. यहाँ पे मैंने दिखाने का, जैसे हमने आगे वाली स्लाइड में बोला था, अगर बुल मार्केट तो सिंपल बाइंग ऑफ अ कॉल, अगर आप सेम बुलिश स्ट्रेटेजी अगर हम लोग बोले ऑप्शन में तो बाई कॉल है, उसके साथ में बुल कॉल स्प्रेड के अंदर में भी आप काम
कर सकते हो when you will it is a negative और से डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी है जहां के अंदर में आप you are doing one long call with the lower strike and one short call with the higher strike का आप प्राइस बैंड बना के अंदर में काम कर सकते हो. इफ यू आर बेरिश इन द मार्केट आप बाय पुट कर सकते हो विच इज मोस्ट इजी स्ट्रेटजी, लेकिन उसके साथ में आप बाय बियर पुट स्प्रेड भी काम कर सकते हो when you are long on one put and you are short on lower strike put के ऊपर आप काम करके भी इसके अंदर में काम कर सकते हो. So there are so many strategies which work on the options. Option is basically in a canvas. You can design your own strategy as per your risk appetite, as per your understanding. But when we deal in options, we have to do some insight, some knowledge about not only the market but also about the option Greek also. These are the 5 Greeks which works on options, that is delta, gamma, vega, theta, and rho. So you need to understand the importance of each and every parameter, and then you need to execute the option strategy. But by my only earliest request to all the participants is, suppose you are active in equity doing options trading there, please use your same expertise and start trading in crude and NG option also. सो दूसरा ऑप्शन में काम करने के लिए आपका जो प्राइजेस हैं वो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑल द कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रीमियम प्राइस, तो आपको जो खर्चा लगता है दैट इज ऑल्सो वेरी लो, तो आप उसके हिसाब से भी काम कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड समीर भाई, and thank you very much for this opportunity, and over to you sir. Thank you, Komal. Been excellent presentation. I think very in depth in terms of the product, core product, and one of the staggering things which came out of the presentation was the kind of volumes which are happening in the crude and the natural gas options. We are witnessing one of the highest volumes over this, the launch in probably 3 odd years, 4 odd years, and this is probably the best time where one can explore the options in conjunction with maybe futures with with few of the strategies which Komal ma'am just suggested. So I think thank you very much, ma'am, for giving us so much insight on this energy basket from MCX exchange. The mini contracts introduction I think is a blessing because the some of the participants probably who feel that the larger contracts with the kind of volatility happening, I think the introduction of the mini contracts, I think, is the can't be a better timing to it. So thank you so much, Komal ma'am. I think it was a great presentation. I would request Saumil to take us forward with respect to some of the insights in maybe in terms of technicals, so that people participants can understand more in terms of these products. So over to you, Saumil. Samir bhai, can you give me the rights to show my screen? Yeah, I would request Khushbu to hand over the rights for presenting to Saumil. Yes, Saumil, you would be able to share. So instead of Saumil, just give me Dilip. Dilip, I'm here. yeah, okay, okay. Ma'am, you can give it to Dilip the sharing rights. Okay, fine. Me. Hello everyone. Hope my screen is visible and my audio is also clear. Yes, And yes. Go ahead. so, as Komal ma'am has already taken in depth details about the energy pack, and in that also most of the aspects has been covered by her. Uh, Here we are trying to summarize some of the things which has been happen over the last 1 to 2 months. What are the scenario has been panning out going ahead, and what would be the outlook for the uh, energy as a pack will be from the fundamental as well as on a technical side is concerned. So without wasting much of the time, let's jump into the presentations. Uh, as you can see from the chart, these are the few events, and after the events,
how the price has behaved. We go back to the history. If we see the somewhere around 2005, the crude oil prices were hovering around the $50. When the hurricane has happened and Katrina in the Gulf of Mexico, we have seen that the supply was disturbed and the crude oil prices jumped from the level of 50 odd levels to 60. Again, we have seen the 2007-8 bubble in which the crude oil prices started moving higher just because of the uncertainty over the global crisis and the way the housing bubble has been burst and the safe haven demand has generated. Peoples are rushed to the commodity side as the majority of the equity assets or risk assets have plummeted. Going back to the 2008 when the recession hit the crude oil prices, which is the direct correlated to the demand and supply, we have seen that the crude oil prices started falling from, uh, as you can see, from the level of somewhere around 145 to uh, drastically it has fallen to the level of 40 kind of a things. This was the case. Then again we have started first stabilizing and the market has again started going higher. We have seen again the level of 120 odd levels since then, 3 4 years of a consolidations, and then again the prices have fallen back to the level of 30 kind of a level. uh, then again we have seen that the tensions between the Iraqs and just a second. So this was the period during which US and Iran deal were there. So ultimately, looking by the historical side, what we have seen that the frequently the events has happened during the last 14 15 years, and that event has provided an extra volatility for the crude oil market is concerned. As we can see that the crude is one of the highly volatile commodity, and the way the exchange has introduced the options and the so much volume has been started picking up in the exchange front. So the as a small investors or the conservative investors or a traders can easily use the options as a trading strategy. From the last 15 16 years, what we have seen is the as soon as the prices falls below $40, some of the other news came and we see that the crude oil prices started bottoming out. The same way on a higher side, if we go by the level of somewhere around $120 kind of a level, we see that there's some kind of a negative news comes and again the crude oil prices backs to the basic. If you go by the average prices, crude oil prices remains somewhere around 75 to $80 on an average basis of for the last 15 years. So this was the things which we are trying to highlight in the said slide. uh, Next side, the basic the concepts of demand and supplies which drives the any commodity prices. As we all know that the prices of a commodity will be driven by the demand and supply. uh, if you go by the demand side, as you can see that the demand projections from Q1 23 to Q4 24, the most of the agencies, which is EIA, IAE, and OPEC, all are expecting that the demand for the OPEC crude will remain on a higher side, and that will be just because what we see that the way the global economy has started rebounding even after the monetary tightening by some of the global central banks. What we have seen that the demand has never came down, though the prices has been fallen just because of the some of the restrictions and sanctions happens on the Russia, and due to that some of the Asian um, countries has bought the crude from the Russia, and the demand for the OPEC as a whole has declined. But as the Russian crude oil prices hit the level of $60, the demand will again start picking in for the OPEC crude oil. So looking by the forward demand side for the crude oil, we expect somewhere around 104.25 million barrels a day.
demand can be seen in the 2024. So that will be the trigger point for the crude oil prices to move higher. In anticipations of the same and the way the crude oil prices has been consolidated since last 6-7 months, the scenario for the longer term crude oil prices remain on a bullish side. However, there are some of the concerns remain on the shorter term basis, as we see that the global central banks are near their peak. The markets are also worrying about the recession worries. And as Komal ma'am has also highlighted, whenever there is a recession worries come, the prices of the crude oil price remains on a downside or remain on a pressure under pressure. But if you go by the last 15-17 years of average price, it mostly remains somewhere around $75 to $80 on an average basis. Sorry. Let's go by the some of the supply and the demand side of the crude oil prices. Here, on a Q1 basis, if we go by the supply side, this blue line is indicating that the crude oil supply is concerned. As we see that since last couple of months, OPEC nations has started crude oil productions cutting the crude oil productions, and they are expected to continue their productions cut for the next 2-3 months further. Apart from that, we believe that in the August month, the uh, OPEC plus Russia, both the nations will start cutting their productions. That will create a shortage for the crude oil prices in the market. And going ahead, if we go by the chart and the estimates, after the fourth quarter, we see that the supply will be on a stable side, and as the demand gets pick up, we see that the OPEC nations will start producing more and more, as they are also looking for an opportunity to get the maximum supply and earn more. As the prices remains somewhere around $80 to $75, they are on a break even to positive, break even to profit side. So they will start the producing more going ahead, and that's why the demand supply will match in the 2024. Going by the US crude oil commercial inventory, currently we are at the lower standard deviations band of the uh, so far as concerns for the US commercial crude oil inventory is concerned. Historically, what we have seen that whenever the inventories reach the lower band, again the inventory will start picking up. So that's the reason, and we believe that the inventory from here in the US will start picking up. Since last couple of months, what we have seen that the US has cut their strategic reserves and provided the supply in the market. But as the strategic reserves started falling, this is the chart in which you can see that the US strategic reserves has fallen to the lowest level since 1982. So for the survival sake or future demand side is concerned, we see that the US will start in accumulating their inventories and start accumulating crude oil so that the future may get secure. So this will be reflected in the inventory side as well as on their demand side is also concerned. So if we the next chart is that the global capex and total supply is concerned. During 2006 to 2014, you can see from the chart that the globally the capex has been happened somewhere around 75% sites, and the productions remain on as 5%, as there is a cycles of 5 to 7 years to come into the productions as a full fledged. अपने ने देखा कि जो 2006 से लेके 2014 में जिन लोगों ने भी क्रूड के प्रोडक्शंस के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसका फ्रूटफुल जो है उन लोगों को 2015 के बाद में जो है उसका प्रोडक्शंस देखने को मिला। जबकि अपने देखे तो 2015 से 2022 तक अपने देखे तो the capex which used to come in the market has fallen from somewhere around 700
billion kinds of dollar to merely 350 to 400 billion dollar kind of. So that was the case. We see that as the capex were lower while the productions has already peaked. So going ahead, what we see that as they haven't expanded their capacity, the production is likely to come down. So that was the case for the bullish crude oil prices. Now I will hand it over Saumil. He will guide you on the basis of the technical how the trends will look like in the shorter term and how the long term will be viewed. To summarize, before giving to the Saumil, I would like to summarize the some of the fundamental aspects in the brief. Uh, by the point side, if we go, the demand is going to be higher in the 2024. Supply will remain relatively on a lower side as the OPEC plus nations are going to be remain on a tighter supply side. While on a demand side, Asians demand for the crude oil remains on a higher side. As you can see that the India, China, and majority of the Asian nations are having that good amount of demand and they will drive the market, crude oil market on a higher side. So to summarize, in the shorter term there will be some headwinds, but going back to the 2024 we see that the headwinds will turn into the tailwinds and the crude oil prices will may see the higher trend. Now I will hand it over to Saumil and he will brief about the technical side. Thank you, Dilip bhai. Good afternoon, everyone. Let's start the technical outlook of crude oil and natural gas. तो ये जो अभी फिलहाल जो चार्ट्स है वो नाइमेक्स डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल का चार्ट्स है। आप देख रहे हैं कि काफी टाइम से ये प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड हो रही है। लास्ट आप 12 वीक से प्राइस देखो तो एक 13-14 डॉलर के आसपास ये एक ट्रेंड बना रेंज बनी हुई है। वही रेंज में काफी टाइम से ये प्राइस प्ले हो रही है। रिसेंटली जो फंडामेंटल चेंज हुए ओपेक प्लस के तरफ से ये जो सप्लाई कट्स हुए और ये अभी रिसेंटली लीबिया का भी ये लास्ट वीक हमने देखा थोड़ा प्रोडक्शन होल्ड हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से थोड़ा बुलिश मोमेंटम बना हुआ है प्राइस में और ये एक जो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ये प्राइस निकली हुई है। आगे चल के ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी नियर टर्म देखे तो एक 77-76 का एक हर्डल है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो फिर प्राइस डायरेक्टली 83 तक मूव हो सकती है और अभी जो भी रिसेंट सिनारियो है उसके बेसिस पर ऐसा लग रहा है कि प्राइस आगे एक अपवर्ड मूव थोड़ा करेक्शन होने के बाद अपवर्ड मूव में वापस जा सकती है। पर ब्रॉडली हम देखें तो काफी टाइम से एक ये जो लास्ट नवंबर के बाद प्राइस एक देखे तो एक ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेशन हो रही है क्योंकि ओपेक के इतने सप्लाई कट करने के बावजूद भी जो ये सेंट्रल बैंक्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट हाइक एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट जो हाइक है उसके हिसाब से इकोनॉमिक स्लो है और डिमांड फ्रंट भी हम देखें तो चाइना में और यूएस में इम्प्रूव हो रहा है पर जो दौर पे होना चाहिए वो दौर पे नहीं हुआ है अभी तक। इसके लिए एक प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। अब अभी ये जब भी आगे ये 83 को क्रॉस करेगा तो एक फिर बड़ा बुलिश मोमेंटम सिनेरियो डेवलप हो सकता है। अब ये हम देखें तो सेकंड हाफ में ये अभी रिसेंट जो भी फैक्टर्स है वो काफी सारे सपोर्टिव बन रहे हैं और आगे चल के इसमें एक लंबी तेजी भी शुरुआत हो सकती है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म प्राइस 63 इज बॉटम हो सकता है, यहाँ से नीचे प्राइस जाना नहीं चाहिए और आगे चल के एक अपवर्ड रैली आ सकती है, राइट। अब देखते हैं ये एमसीएक्स क्रूड ऑयल का, तो ये एमसीएक्स क्रूड ऑयल में भी सेम सिनारियो है पर यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी यूरोपी की वजह से भी हमको प्ले करने को मिलता है। अभी ये जो रिसेंटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ये प्राइस निकली हुई है और ये इंटरमीडिएट जो ट्रेंड लाइन है बड़ी उसको प्राइस अभी ये रेजिस्टेंस बना के अभी एक थोड़ा करेक्शन आया हुआ है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में ऐसा दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे वापस ये 5900 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो थोड़ा डीपर करेक्शन 5600 5700 के आसपास अपने को देखने को मिल सकता है और फिर वहां से वापस एक अपवर्ड मूव शुरू हो सकता है।
और ये जो अभी ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो एक ब्रेक होके फिर प्राइस वापस 6800 तक मूव हो सकती है। तो फिलहाल अभी इसमें भी एक थोड़ा शॉर्ट टर्म में हार्डली देखे तो करेक्शन दिख रहा है, पर आगे चल के इसमें भी एक रैली बन सकती है। तो ब्रॉडर टर्म हम देखने को जाए तो ये क्रूड में बाय ऑन डिप्स भी हम कर सकते हैं, और अगर हाई हायर स्ट्राइक प्राइस के हम ऑप्शन में भी इसको लॉन्ग साइड में इनिशिएट कर सकते हैं। जब भी करेक्शन आए तभी भी ऑप्शन में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, ताकि थोड़ा प्रीमियम अपने को कम पे करना पड़े, राइट। अब ये जो है नेचुरल गैस का चार्ट है, ये नेचुरल गैस का वीकली चार्ट है। तो ये अपने लास्ट वीक जो ये लाइफ टाइम हाई प्राइस हुआ उसके बाद ये स्टीप करेक्शन आया हुआ है, और प्राइस देखे तो ये 168 के लेवल के आसपास जाके अभी एक बेस बना के लास्ट 24 वीक से ये एक 100-150 रुपए की रेंज में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये इस क्योंकि इसका जो भी फंडामेंटल है वो देखने जाए तो यूएस से जो एक्सपोर्ट हो रही थी यूरोप में, वो अभी कम हो रही है। दूसरा कि वेदर भी आगे चल के अभी इतना फेवरेबल नहीं है कि जो उसका डिमांड पिकअप कर सके। दूसरा कि प्रोडक्शन पहले जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो प्रोडक्शन में ग्लोबली फॉल हुआ था और सप्लाई डिस्टर्बेंस हुआ था, वो अभी सॉर्ट आउट हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में फंसी हुई है, और आगे चल के ये विंटर में हो सकता है कि वापिस इसमें एक अप मूव आना शुरू हुए। पर टेक्निकली लेवल देखने जाए तो ये 245 का एक बहुत बड़ा हर्डल है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, इसके ऊपर प्राइस मूव नहीं होती है, तब तक ये तेजी का ट्रेंड आगे शुरू नहीं हो सकता है। तो जब तक ये 245 के ऊपर ना निकले तब तक ये कंसोलिडेशन जोन में ही प्ले हो सकती है। हालांकि डाउन साइड भी यहाँ पे लिमिटेड दिख रहा है, ज्यादा डाउन साइड इस लेवल से नहीं दिख रहा है। 180 165 का एक लोअर साइड का बैंड बना हुआ है, उसके नीचे ज्यादा करेक्शन नहीं आना चाहिए। उसके नीचे वहां पे अगर 180 195 के आसपास भी प्राइस मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और प्राइस वापस ऊपर 240 के आसपास लेवल रिटेस्ट कर सकती है। पर लॉन्गर टर्म ऐसा दिख रहा है कि एक बॉटम बेस हो गया। जब भी ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट होगा तब उसमें एक बड़ा मूव आने का एक्सपेक्टेशन है। और डिजिटल गैस की एक ऐसी खासियत ही है कि जब भी ये मूवमेंट शुरू होता है तब ये लंबी मूवमेंट में रहता है। आप देख सकते हैं कि इसका हिस्ट्री ऐसा ही है। तो उसके बाद में 240 का लेवल एक बार क्रॉस करेगा तो आगे एक रैली हो सकती है। So this is all from our side. Thank you very much, everyone. Thank you, Dilip bhai. Thank you, Saumil. I think it was a very complimentary presentation from the first session. Exactly what we are seeing, the high volatility on the charts also historically. The prices currently are in quite a narrow range as we saw in the charts, but I think looking forward, we can expect some upward movement in the prices in the coming months going forward. HDFC Securities does provide commodities. As a bank broking, we were allowed to, offer commodity 2019 onwards. So we've started our operations 2019 onwards. Somebody who wishes to start commodity trading with us can simply, the existing client just have to go to our website and just activate the commodity segment. We are not charging any fees for it. It is absolutely free of cost. Any new participants who wants to connect with HDFC Security, they can also do that. We have recently started a new platform, HDFC Sky, where commodities are active and they can trade on mobile app also. In our existing system, we are in process to offer the commodity segment on ITS and mobile platform in the coming months. So stay tuned with us. There's lots to offer in the coming days. We have our in-house research. We just heard from Mr. Dilip and Mr. Saumil. They generally come out with the daily reports, weekly reports, where there is an opportunity, they just guide the clients. There are days where there is some special calls also available where clients can take benefit of the same.
So that's it from our side. We have some few minutes. If somebody has any question, on the right hand side there is a tab which says questions. They can post their question and name. We have few minutes, so we can take few questions, and then we can wind it off. So one question from Mr. Bharat has come that when will the online platform come? So I just mentioned that on HDFC Sky, the online trading of commodities is available with HDFC Securities. One just needs to go to the HDFC Sky uh, app and they can download it and they can start trading commodities. The other way currently which we have is the offline desk where they can start the dealing desk team, call the dealing desk team, and they can call and trade. So this is currently the scenario. So there is one question. Uh, can we buy NG for 3-4 months? What will be the SL? The question is from Madhu. I am not able to get it, but Saumil, if you can take this question, can we buy NG for 3-4 months? What will be the SL? Yes, 195 to 200 is a good buying opportunity. You can buy with the stop loss of 180, and if for the deeper stop loss, you can put 160 deeper stop loss. So the volatility cannot hit your SL, right? The upside probability target is 245, and has been mentioned once the price cross the 245 level, it can rally towards 300, right? So you can Right. buy with stop loss of 160. All right. The stop loss is 160. The similar question we have is from Ashwini. What is the view on short-term monthly of natural gas? Bottom natural gas price can play in the range of 180 to 230. 230 to 40 is the higher band. So price is broadly consolidation in this range from last 24 weeks, and we expect the same trend follow in the future, right? So the range is the 180 to 230 to 40 upside. So you can buy is in the lower range around 195 to 200, and keep a stop loss at 180 for a shorter time frame, or a broader time frame. You can put a stop loss of 160. All right. So thank you, Saumil. Komalji, there is one question from Mr. Dinesh. He's asking how many months into future do we have contracts for crude oil and natural gas? And 3 month second, forward. 3 month 3 months. we have contract. Yes. Yeah, so Dineshji, 3 months from the current month and the next 3 months, that is the contracts which are available where you can trade crude oil and natural gas. So with decent liquidity, we can say that. Yes, sir. Yeah, yeah. So what kind of open interest do we see of these products? Uh, so Sir, open interest. If you can log in our site or in HDFC screen, you can. The numbers are the self-explanatory, sir. There is a right, huge OI in both the contracts, sir. So there is right. no, there he's. I think he's more as an investor. His concern is very right. Whether there is a proper invest, I mean, open interest are there or not. But it is there, sir. You log in the HDFC security screen also, or into our website also, sir. Perfect, perfect. So there is ample of open interest and liquidity we can see, and the same numbers you can see while logging on to our HDFC Security website also, and on MCX platform also on the website. You can easily get this data available readily. So next last question we are taking is where is HDFC Sec we can find to trade? Can we get to see here? So currently, like I said, we have an offline desk for commodities. On the existing screen, will not be able to there. We are in process to that the development is going on. So probably in few months we will have that mobile application and the ITS platform
where you can trade by yourself. Secondly, like I mentioned couple of times, that HDFC Sky is a new platform which we have introduced, and client can trade commodities on the mobile app over there. So on Google, if you type HDFC Sky, you will be directed to the website of HDFC Sky, and all the details you can find over there. Yeah. So I think there are few more questions, but I think we are running out of time. So maybe we can take the last questions. From Mr. Dinesh only is there. Do we have long dated contracts like 6 months and 1 year with enough open interest? So, Mr. Dinesh, I think if you log into the websites, I think you will find out the data. But currently, what Komal ma'am also said, the 4 months forwards are available, 4 month ahead futures are available with decent open interest and liquidity. You can say that. So maybe currently from this date, 3 or 4 months, you can look Yes, true, where you true, can. true, sir. Yes, ma'am, correct. Yes, sir, very true, sir. Whatever said, that is right only, sir. So Right, also right. I would like to also add in that even in Yeah, the sure. if you go by even if you go by the NYMEX contract, you don't find the much of the open interest on the after 6 months, 6 to 12 months, though there has been some 12-month contracts available, but the volumes and open interest remain on a lower side. So first 4 months is the best month for the trading side is concerned. So and the liquidity is more than enough for the traders who wants to take a call for the next 4 months. Perfect. Thank you, Dilip bhai. Thank you, Komal ma'am. I think we are running out of time now. Once again, I would like to thank Komal Kanzaria ji from MCX for her valuable time and inputs on the contracts of MCX, and showing highlights on the futures and the options trading aspects from MCX. Thank you, ma'am, so much for your time. I would also Thank you, like to sir. thank Mr. Dilip and Mr. Saumil for showing us the insights on the technical aspect and some of the historical fundamentals on crude oil and natural gas. I think we will have a lot of benefit from them with respect to those charts. So thank you once again, Dilip ji and Saumil, for your valuable time and input. I would like to thank all and for joining us. We will have this process ongoing for the next month also, with new topic we will come out for the next month. So stay tuned and we'll keep you posted on that. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank Thank you you. everyone for joining. Thank you.